राइट्स टू हेल्थ ही नहीं, मेरे ख्याल से बाकी सारे राइट्स को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और महिलाओं के लिए तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप डूइंग द लिप सर्विस। बहुत समय से ये बात वुमेन्स राइट, इक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर बजटिंग, ये सारी तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। एंड दैट्स द पॉइंट आई वाज मेकिंग। आप कोई भी डेटा उठाकर देख लीजिए, जेंडर पैरिटी बाकायदा कायम है। अगर मैं 61 से लेकर 2011 के डेटा की बात करूं, आप एजुकेशन ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स हैज इट्स ओन इश्यूज ऑल्सो, लेकिन वो अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन जो गैप है वो बाकायदा कायम है। तो अगर हम पॉलिसी फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हम जेंडर बजटिंग करेंगे, पैरिटी लाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये जो गैप है दिस शुड हैव स्टार्टेड टू टेपर एटलीस्ट बाय नाउ। जो अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर समथिंग व्हिच वी नीड टू सी विज़िबली the way we've been formulating policies, one, and the way we've been implementing policies. और वहाँ पे आके शायद as implementers of the policies we all behave in our own socio-cultural milieus when it comes to putting them together. For example, जब हम बहुत सीधी सी बात menstruation जैसे मुद्दे को, चूँकि हम उस पर चर्चा कर रहे थे फिलहाल, एक तरफ तो हम ये कह के चलते हैं कि भाई ये तो नेचुरल है, व्हाट, सो व्हाई मेडिकलाइज दिस काइंड ऑफ नेचुरल थिंग्स व्हिच हैपन टू वुमेन। लेकिन उस व्हाई मेडिकलाइजेशन में अगर मेरिट है, तो मेरिट ये भी है कि उसके बारे में हम इवनली बात करें, उसके बारे में हम उस तरह की सोच बनाएं जहाँ पे आपको ये कहने में कोई संकोच नहीं हो कि वेल आई एम मेंस्ट्रुएटिंग, या मुझे फलां किस्म का पैड चाहिए, कैन आई आस्क माय ब्रदर टू गेट मी वन। वो एक चीज। दूसरा जो शायद मुझे लगता है बहुत ही अहम मुद्दा है, मेंस्ट्रुएशन से जो हमने सोशियो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को जोड़ दिया है। जब आप कह रही थी कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर नॉट अलाउड, आई मीन दे लूज वर्क टाइम, वर्क आवर्स इफ द वुमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग। It's not only that, they're prevented from working if they're menstruating because of the religious context की जो भी फसल है वो इम्प्योर हो जाएगी या वो खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। वेरी सिमिलर टू, आप अचार नहीं छू सकते, आप दही नहीं छू सकते, आप पूजा के कमरे में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं सर्व कर सकते वगैरह वगैरह। तो जब हम उस कॉन्टेक्स्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बिगिन फ्रॉम यू एंड आई एज इंडिविजुअल्स, देन ओनली परहैप्स जब हम RCH की और एम्बेडेड प्रॉब्लम्स, एम्बेडेड पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, वो आएगा। दूसरा जो मीनाक्षी जी शायद मैं आपसे ही समझना चाह रही थी, जब हम ये कह रहे हैं कि वी एज इंडिविजुअल्स वी हैव टू क्लेम दैट स्पेस इन दैट विलेज, कि ये हमारा स्पेस है, बाय डूइंग सो यस वी आर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर वुमेन। लेकिन इस सारे करने में क्या हम स्टेट को एब्जॉर्व कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाना उतना ही जरूरी है कि it allows or it makes, empowers, if I may use that word, women to be able to claim that space. शायद वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज को देख लीजिए, हाउसिंग प्लान्स को देख लीजिए, वेयर इज दैट स्पेस फॉर वुमेन किचन को छोड़ के? थैंक यू। Thank you so much, ma'am. My next question to you, Mr. Banik, is from the audience side. Does gender inequality exist in the diagnosis of occupational disease? So one thing that we have noticed, in the human development indicators, the reason why India get a lower rank has to do with the gender disparity that we see in the context of India. So two important things, which is actually pulling down our HDI ranking in the world. One is the lack of gender equality, and the second has to do with the lack of trying to control the change in climate. So these are the two important things. And what was your question? That whether does gender inequality exist in the diagnosis
That data I don't have, but what I have is, uh, if you look into the recent data, what is happening is the number of female participation in the workforce, that has come down. Now, why it has come down, that is again a matter of debate, because as you were mentioning that in a particular village, there can be a common space, but even within a village, if I control for the caste and creed, you will find that this kind of common place are not being used. And there are some suggestions and there are some studies which kind of say that even now, one of the reasons why you see at a village level women participation is following or falling has to do with the predominance of caste and creed within the village society. Okay, of course, from the positive side, one can always argue that because the income level is increasing, you see the tendency of women to work, go out and seek for work, that has fallen. But but at the village level, even that may not be true, because what is happening is, like last year I was talking to few of the uh, women entrepreneurs. They wanted to open what they call salon, beauty shops in village. But they had big problem in terms of access to finance. They had big problem whether a particular caste in that village can actually become a woman entrepreneur. So that caste and creed is still playing a dominant role when it comes to the woman empowerment or trying to do something on their own. Just wanted to add what Nilanjan has just said. I want to bring in one particular occupation here, the scavenging occupation. Now, this is one occupation, I think, which connects not only with health, but also the environment. And both men and women are involved. We know the surface cleaning, it's 90% of it, which is done by women. And women of both communities, both large communities that we're discussing at the moment, Hindus and Muslims. We have a very good study on the Muslims in Hyderabad who engage in scavenging scavenging activities. And when it comes to disaggregating, and I can come from the field little that I've understood, a good number of women, something to the tune of ranging between 80 to 90%, have reported respiratory ailments because they are the ones who are cleaning, the brooming, the surface cleaning is there. A lot of dust raises itself and infects them. Similarly, when you're looking at men, most of whom, again, 90% of them are engaging in drain cleaning and sewer cleaning, and they have reported ailments which range from skin to kidneys to ear and eye ailments to the extent of losing sight and hearing. There's a very good study by C.S.M.C.H, which was done way back, I think, during late 80s and 90s, repeated subsequently, tells us very, very clearly that this is what is happening. And there's a good number of literature which is suggesting it. So the point, therefore, I'm making is when it comes to occupational hazards in terms of work, there is a very neat divide in terms of occupations and how they're affected. Stress and anxiety in men and women who are engaging in high-profile jobs are also very evidently different when it comes to men and women. And I think that was the point which was marked by Dr. Ambedkar's work in Mica mine workers, to restrict women's entry into the dikes as compared to men because of the hazard which was engaged in. Thanks.